Praful sir, please begin. Okay, sir. Good evening, one and all. I, Mr. Praful Damor, Assistant Professor, Parul Institute of Nursing, Parul University, Vadodara, welcome you all in this online webinar. So this webinar, our motto is to keep the criteria very simple, that in first week of September, we are keeping as a nutrition week 2022, and we are celebrating this week as a very important part of our community, as well as a small child, and for mothers is also it is very useful. So which has been celebrated from September 1 to September 7. So in this occasion, Parul Institute of Nursing organized an webinar. So here we have our speaker Samta Soni madam. We welcome you madam in this live webinar. Thank you, Mr. Damor. Thank you. Somewhat what I can say, I will read some points regarding madam. So first of all, madam is having more than 28 years of experience in a field of nursing. So it is actually more than my age, madam. Okay, madam has completed diploma in nursing in 1993 from Rajasthan Nursing Council, Jaipur. And in 2002, madam has completed post-basic BSc Nursing from Rajasthan University, Jaipur. Master of Nursing, Community Health Nursing, madam has completed from Jivaji University, Gwalior. And in 2016, madam has completed PhD Nursing from Dr. K.N. Modi University, Rajasthan. And madam has have more than madam has started their work experience from 1993. So till then, madam is working in various areas like Community Health Center Wazipur, Community Health Center Gangapur, and CT Surgery Unit in 2002. And after that, madam, till in 2010, madam has joined Government College of Nursing, Jaipur, and till now, madam is working there. And madam is also having professional memberships like TNAI, Sochni membership, Shomi membership, and SPI membership, which is Life Member Safety Professional of India, and also having IAPH membership and lifetime member of SPEAR. And madam is having various committee member also, in that include of a member research committee RUHS Jaipur, convener at a graduate program Government College of Nursing Jaipur, co-convener MSc Nursing Entrance Exam 2016, and madam is also working as an expert and advisor of RPSC selection of candidate for post of nursing tutor. And madam is also having a certain research conducted, various research conducted and publications in various Scopus and Web of Science journal, and having authorship in many books. I can give some of the books name, which is National Health Planning and Policy, that is CBS publisher New Delhi. Second, New Textbook of Advanced Nursing Practice, JP Medical Publisher, Delhi. Textbook of Community Health Nursing, Amit Publisher, Jaipur. Fundamental of Nursing, Operations Theatre Techniques, Chief Editor of Journal in Nursing.com. So if I read Madam CV, it is taking a long time, so I will keep short. So I welcome you, madam. Thank you very much, Praful. Thank you, Parul University, for giving me this auspicious opportunity, and thank you for introduction very nicely. मेरे को पता है कि ये सारा नहीं बोलना था, मुझे आपको बीच में टोकना था, but I was setting my angle of sitting, so I didn't disturb you. Thank you very much. So kindly give me permission for sharing my screen today. Yes, madam, you can share. Okay. Thank you very much. और I cannot see the audience, but मैं हमेशा देखना चाहती हूँ audience को, क्योंकि the audience are the motivating factor every time for me during the presentation. So, but कोई बात नहीं, चलेगा. So we are celebrating National Nutrition Week NNW in India every year, and this is the first time when we are deviating from the theme. We are celebrating with a different and fascinating theme. So I will start with a छोटा सा quotation है. ओम अन्न पते अन्नश नो देहन विवश सुष्मिणे प्रदातारम तारिश ऊर्जनो देहि द्विपदे चतुष्पदे. नानाविध अन्नों के दाता सविद
अन्न प्रदान करो, रोग रहित और पुष्टिकारक अन्न दे, ओज प्रदान करो, अन्नदाता के मंगल करता, ऐसा प्रभु विधान करो, प्राणी माते सब पाए भोजन, सबको सुख शांति प्रदान करो. With this quotation from Yajurved 11.83, I will start the presentation. So this year, government of India decided theme for the National Nutrition Week is celebrating a word of flavor. स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है. या स्वाद की दुनिया को हम किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये थीम उन्होंने रखा है. कुछ हिंदी इंग्लिश. प्रफुल्ल, आपने मुझे हिंदी और इंग्लिश के लिए तो अलाउ किया था, मैं थोड़ा सा बिना परमिशन के संस्कृत भी ले आई हूँ. सो दीपो भक्ष्यते ध्वांतम कजलम च प्रसूयते यदनम भक्ष्ये नित्यम जायते तादृशी प्रजा. The lamp consumes darkness and produces dark soot. Similarly, what food we eat affect what we produce of its flame. दीप अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है. इसी प्रकार जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हम संतान और हमारा मन हो जाता है. तो इंडियन न्यूट्रिशन सिनेरियो को भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी. ओबेसिटी इज बिकमिंग ए मेजर इशू इन अर्बन इंडिया. On other hand, there is a very serious problem of hunger and malnourishment that is affecting a large part of population, and in government of India also fighting for non-communicable disease, in which obesity is a main risk factor for the NCDs, non-communicable diseases. And especially in rural areas. According to Global Hunger Health Index Report 2021, India ranked 101 among 116 countries. 101वां स्थान है हमारा Global Hunger Health Index में, and this means we have a long way to go to ensure that our all people have access to nutritious diets. So 38.4% of children under age 5 are stunted and 46 are underweight for their age, according to the Global Health Index. Abnormally low weight for the child height affect 19% of children under age of 3. Overall, girls and boys are about equally likely to be undernourished. यहाँ पे कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लड़कियां कम है या लड़के कम है. दोनों ही इक्वली अंडरनरिश्ड हैं, कुपोषित हैं, अल्पपोषित हैं. Most children under age 5 are anemic, 79.2%, and the prevalence is slightly higher in rural areas. Prevalence of anemia in rural areas is higher than in comparison to urban area and among non-educated mothers. Overweight and obesity affect almost 15% of women and 12% of men in India. Only 51% of Indian households are adequately iodized salt. So vital needs of life are air, water, and food. So we are not discussing air and water today. We will discuss food only. But yes, air is also, हमें शुद्ध हवा चाहिए और इसके लिए वनों का डेवलपमेंट गवर्नमेंट करती है. हम पेड़ लगाने के लिए कहते हैं. और अभी भी जब हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, इन दिनों अनंत चतुर्दशी तक मनेगा, वहां पे भी हमने इको फ्रेंडली गणेशा लिए हैं, जिनको जब हम विसर्जित करेंगे तो एक पेड़ उगेगा और वो हमें गणेशा की याद दिलाता रहेगा. ऐसे ही हम कहते हैं पानी भी शुद्ध होना चाहिए. और पानी के शुद्धिकरण के साथ साथ पानी के संचय की बात, उनके कलेक्शन ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर और सेव वाटर मुहिम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट स्टेट के, नदी बचाओ अभियान भी एक चल रहा है. एंड देन वी कम टू द फूड. सो दीज आर वाइटल नीड फॉर लाइफ: एयर, वाटर एंड फूड. So importance of nutrition, the government of India has accorded high priority to the issue of nutrition, especially among pregnant women and lactating mothers. Every time we are discussing about pregnant women should eat this, pregnant women should eat that, and lactating mother also. The one should have proper nutrients in his or her diet that include protein, carbohydrate, fat, vitamins, and minerals, which is necessary for growth, body functions, and tissue repair. As we know, we need balanced diet every time. Infants should be given breast milk because it contains adequate amount of protein, fat, calories, lactose, vitamins, iron, mineral, and enzymes, which help to build immunity in infants. According to WHO, World Health Organization, nutrition is the intake of food considered in relation to the body's dietary need. आपकी शरीर की जो भी पोषक आवश्यकताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फूड लेना चाहिए. WHO ने कहा, nutrition is an issue of survival, health and development for the current and succeeding generations, and a well-balanced diet
with a combination of all the essential nutrients like protein, carbohydrate, fat, minerals, pani, plays a pivotal role in growth and development of our mind and body. So what are some benefits of good nutrition? If in case we are having a good nutrition, what the benefits to the body? It strengthen our immunity. In case we are taking good nutritious food, so it will strengthen our body. It improve our mood. अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा मूड भी अच्छा होगा. और हिंदुस्तान में तो ये कहावतें भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन. Provide energy, nutrition. In case we are taking good nutrition, it will provide energy in the form of calorie, in the form of stamina, maintain a healthy body weight, and helps to live longer. Then provide energy to manage our lifestyle. In case we are having, even we are not having good nutrition, we cannot manage lifestyle. So maintain body healthy, reduce the risk of various chronic diseases, likewise chronic diseases like with diabetes, like with tuberculosis, like with any other diseases. But if in case we are taking good nutrition, it will reduce the risk, delay the effect of aging. अगर हम अच्छा खाएंगे तो थोड़ा सा कम बुढ़ापा आएगा या थोड़ा सा लेट हो जाएगी aging. Reduces risk of chronic diseases and reduces risk of mental disorders. So in case we are taking good nutrition, it will also reduce or decrease the risk of chronic diseases and mental disorders. सो गोल्डन रूल ऑफ हेल्थ ईटिंग, कैसे अच्छा खाना खाना है, इसके गोल्डन रूल है जो कुछ वेबसाइट से मैंने लिए हैं पार्टिसिपेंट्स. कीप सराउंडिंग क्लीन, नॉट लिटर्ड विद गार्बेज. आपके आसपास का जो भी इलाका है वो गंदगी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए. हमारे आसपास का इलाका साफ होना चाहिए, चाहे वो किचन में हो या घर के बाहर हो. किचन में भी साफ सफाई होनी चाहिए. ऑलवेज कीप फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड. Flies transmit deadly germs from unsanitary places to food and drinks. As we know that flies are the major cause of cholera and dysentery, diarrhea. So we must keep food and drinking water always covered. Never allow garbage to collect near home. घर के आसपास कोई भी गार्बेज डिपो नहीं होना चाहिए. अगर है तो आप उसको जितना हो सके उसको हटवा दीजिए. Use safe water for drinking, boiled water, tube well water, water treated with water disinfectant like chlorine tablet if available are very safe. Chlorine tablet आप किसी भी health वर्कर के सलाह के बिना पानी में नहीं डालें, क्योंकि you don't know the actual exact amount of the chlorine to be mixed with the water. So kindly go to health worker and ask them how many or how much chlorine I had to mix with the water. So हमें साफ पानी पीना है, उबला हुआ पीना है, ट्यूबवेल का पीना है, और अगर वो पानी पीना है जिसको डिसइंफेक्ट से ट्रीट कर दिया हो. और अब तो घर में भी सब जगह आर और फिल्टर लगे हुए हैं. सो ensure yourself that you are the water you are drinking, it is safe for it can be a source of infection, it can be a source of some other disease and nutritional disorders. So ensure before drinking water that it is safe. Wash vegetables before peeling or chopping. सब्जियों को धोने का मतलब छीलने से पहले, काटने से पहले ही वॉश कर लीजिए, उसके बाद में वॉश नहीं करना है. These are some golden rules. Some more rules are: do not throw away the water in which vegetables and rice are cooked. It contains mineral and vitamin. Use this water for other preparations. इस पानी में आप सब्जियां और चावल धोते हैं, उस पानी को फेंकना नहीं है. इसमें मिनरल और वाटर होते हैं एंड इस पानी को हम दूसरे प्रिपरेशन के लिए काम में ले सकते हैं. Include some raw vegetable as salad with meal. खाने के साथ सलाद जरूरी है, बट बी श्योर टू क्लीन दिस प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. पर सलाद खाने का शौक है और हम उसको साफ नहीं करते हैं तो सलाद हमारे लिए हानिकारक हो सकता है. सो वेजिटेबल्स को जब सलाद के रूप में खाया जाए या खाने की आपका मन होता है तो काइंडली इंश्योर दैट दे आर प्रॉपरली क्लीन. और अभी कोरोना ने हमें सबको सिखा भी दिया है कि हमें हाथ कैसे धोना है, हमें सब्जियां कैसे धोना है, हमारी आदत में आ गया है वो सब. So I hope you all are having good habit of cleaning vegetables and fruits. Do not overcook food as this process destroy vitamin. Be careful about files, especially during infant and children feeding. This is fly, not files. Be careful about flies, especially during infant and child feeding. Fly-borne disease and diarrhea are the common cause of morbidity and even mortality among infant and children. हम सब जानते हैं मक्खियाँ, उनसे डायरिया होता है. Then this is the eat right
अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और ईट राइट विद माय प्लेट, तो आपकी प्लेट में क्या क्या और कितना कितना होना चाहिए एक सिंबल से इन्होंने दिखाया है. वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच द सिंबल. सो इट कंटेन फ्रूट, ग्रेन, प्रोटीन एंड वेजिटेबल इन appropriate ratio, and also the dairy food. So first we will discuss the fruit. Make half food plate fruit vegetables, focus on whole fruit. आपकी आधी से ज्यादा प्लेट में फ्रूट होना चाहिए, आप ये इंश्योर करें, और आपको कटे हुए फल की बजाय पूरा फल खाना चाहिए. Choose whole, cut and pure fruit, pureed fruit, fresh, frozen, dried and canned in 100% juices, and enjoy fruit with meal as snacks or as a dessert. आप फ्रूट को कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं, आप खाने के साथ खा सकते हैं, स्नैक के लिए आप शाम को खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं, और आप मीठे की जगह भी फ्रूट्स खा सकते हैं. Then comes vegetables. Make half plate fruit and vegetables, vary your veggies. आपकी आधा, बाकी की आधा प्लेट में वेजिटेबल्स होना चाहिए, और वेजिटेबल्स इन वेराइटी. Try adding fresh, frozen and canned vegetable to salads, sides and main dishes, and choose a variety of colorful veggies prepared in healthful ways, steamed, sauteed or roasted or raw. आपको कलरफुल वेजिटेबल्स खाना चाहिए. हिंदुस्तान में इतनी वेजिटेबल्स हैं, आप जब सब्जी के लिए जाते हैं तो बहुत सारे कलरफुल वेजिटेबल है, तो आप ट्राई कीजिए कि आपका जो प्लेट है उसमें जो वेजिटेबल्स है वो कलरफुल हो. आप उनको स्टीम करके खा सकते हैं, आप उनको सॉर्ट करके खा सकते हैं, तल के आप उनको भून के खा सकते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स को जैसे कच्चा भी खाया जाता है. Then comes grain, the next component of the my plate. Make half grain whole grains. पूरे ग्रेन का हाफ आपको रखना है. Look for whole grain listed first of the ingredients. Try oatmeal, popcorn, tough, quinoa, millet, bulgur, brown rice, bread, crackers, noodles made with whole grain flour. जो भी होल ग्रेन से बना है, जैसे आजकल मैगी भी होल ग्रेन की आने लगी, तो आपको वही ट्राई करना है कि जो होल ग्रेन से बना है वही सामान आपको इस्तेमाल करना है. Limit grain, dessert and snacks such as cake, cookies and pastries. Cake, cookies और pastries आपको कम से कम खानी है. Then comes the next component of my plate is protein, which vary protein routine. Mix up protein food to include seafood, beans, peas and lentils, unsalted nuts and seeds, soya product, egg and lean meats and poultry. ये आप सब अपनी फूड प्लेट में इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी एक या मिक्स. Try meatless meal made with beans and have fish or seafood twice a week. आपको meatless मील खाने हैं, और आप अगर फिश खाते हैं या सी फूड खाते हैं तो सप्ताह में 2 बार से ज्यादा नहीं खाएं. देन कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो हमें लिमिटेड यूज करना है, जैसे कि चूज फूड एंड बेवरेज विद लेस एडेड शुगर, सैचुरेटेड फैट एंड सोडियम. जिनमें शुगर ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट है, सोडियम ज्यादा है, उनको हमें अवॉइड करना है. और अगर जरूरत भी है फूड या बेवरेज की, तो हमें वो सारे सेलेक्ट करने हैं जिनमें एडेड शुगर कम हो, सैचुरेटेड फैट कम हो और सोडियम कम हो. यूज द न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट टू लिमिट आइटम हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड सोडियम एंड एडेड शुगर्स. न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल पे लगा रहता है, तो आप उसको देख के भी अपना जो ग्रोसरी आइटम है, एडिबल आइटम्स है, वो खरीद सकते हैं. चूज वेजिटेबल ऑयल इंस्टेड ऑफ बटर एंड ऑयल बेस्ड सॉसेस, एंड डिप इंस्टेड ऑफ बंस विद बटर, क्रीम और चीज. ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ शुगर रीडिंग. कोई भी मीठा पेय पदार्थ पीने से अच्छा है कि आप पानी पी लें. Then last component of my plate is dairy product. Move to low fat to fat free dairy milk or yogurt. Fat free dairy milk dairy और प्रोडक्ट आने लगे हैं, योगर्ट भी फैट फ्री आता है, तो आप प्रेफर करें कि वो फैट फ्री हो. चूज फैट फ्री मिल्क, योगर्ट, कैल्शियम फोर्टिफाइड सोया मिल्क टू कट बैक ऑन सैचुरेटेड फैट, एंड रिप्लेस सोर cream and regular cheese with a low fat or fat free yogurt, milk and cheese. आपको फैट फ्री ही डेयरी प्रोडक्ट देना चाहिए. Then we come to the National Nutrition Week, and launched by Ministry of Women and Child Development's Food and Nutrition Board in 1982 in India. इसका उद्देश्य था to raise awareness on the importance of nutrition for human body. लोगों के लिए, मानव के लिए न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता है, उसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना था. एंड द नीड फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशन अराउज बिकॉज ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन, डू नॉट गेट फूड सप्लाई ड्यू टू पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस. गरीबी, अशिक्षित होने से और जागरूकता कम होने की वजह से बच्चों को
औरतों को भोजन के बारे में जागरूकता बहुत कम थी, इस वजह से भी इसकी 1982 में स्टार्ट हुआ। Then the theme of the Nutrition Week in 2022 has been announced by the Government of India and it is celebrate a world of flavors. स्वाद की दुनिया में को सेलिब्रेट कीजिए। और ये एक पिक्चर मैंने गूगल से लिया था, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा और मुझे लगा कि ये आज के लिए काफी मानक सिद्ध होगा। सो goal of National Nutrition Week is to encourage people to enjoy and taste cuisine from different part of the world while keeping the focus on healthy nutrition. हमें दुनिया भर के स्वाद, हम कहते हैं वैश्विक हो गए हैं हम लोग, ग्लोबल सिटीजन है हम लोग, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो हमें इस थीम के पीछे जो गोल थे वो ये थे कि हम वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के हेल्दी न्यूट्रिशंस को एंजॉय करें और टेस्ट करें। It wants people to enhance their diet so that they can get all the required nutrition and to increase public awareness about the importance of healthy eating habits and enough nutrition for maintaining a healthy lifestyle. Then we come to the history of National Nutrition Week. The National Nutrition Week is a central government initiative started in 1982 to promote awareness and good health through nutrition education. The need for establishing a day for awareness of nutrition arose because a large population of India, especially children and women, do not get basic food supply due to poverty, corruption, illiteracy, lack of awareness, and various other contributing causes. Reducing the level of malnutrition and micronutrient deficiency thus became a major concern whose responsibility came on the shoulder of various organizations, especially created for the aforesaid. Government जानती है कि न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस महिलाओं के लिए, पहले सबको खाना खिला के फिर खाती हैं बच्चा। Evaluate the appropriate technique to prevent and control nutritional problem through deep research to monitor the condition of the country for the diet and nutrition and to perform the operational research plan in national nutrition programs. Next objectives are to aware through orientation training about health and nutrition, the national nutrition program, and to aware people through the orientation training about health and nutrition. One more objective is there to intensify awareness generation on the importance of nutrition and productivity, economic growth, and ultimately adaptable training, timely different competitions, road show, and many other campaigns, which we will discuss in the later slides of this presentation. Among popular improving the nutritional status of the population is imperative for national development. लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो राष्ट्र का विकास, ये एक मोटिव उनका था. So these are different flavor. Then some do's and don'ts for nutrition: drink 6 to 8 fresh vegetables, fruits, and lean meat, foods that are rich in dietary fiber, such as whole cereal product, choose low fat or skimmed product. Do not be distracted while eating. अभी मैं भी तो चल या मोबाइल पे कुछ चल रहा होता है, तो ये डिस्ट्रैक्शन हमारे न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज करता है. तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट टीवी और mindful eating, chew food slowly and chew well. स्कूल जब पढ़ते तो कहते थे 32 दांत है तो 32 बार चबा के खाना चाहिए. तो हमें काउंट ही नहीं किया. तो खाना खाते समय खाने भी ध्यान देना, टमी में क्या जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है. और लिमिट आउटसाइड मील मेनली. हिंदुस्तान की तो परंपरा रही है कि उनके फूड हैबिट्स सीजन के अनुसार बदलते रहते हैं. उससे पहले खाना खा लेना चाहिए. कहते हैं कि
दूसरे दिन का खाना नहीं खाना चाहिए। और सर्दियां उनके लिए बहुत अच्छी होती है। वो कहते हैं सर्दी में बहुत हेल्दी है। पीछे सो कोई भी आउटसाइड फूड खाने से उसको लिमिट करिए कि रोजाना बाहर का ड्रिंक एंड अदर शुगर एडेड ड्रिंक्स, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। ट्राई टू हैव एन एडिक्वेट गैप बिटवीन डिनर एंड व्हेन हिट द बेड। सोने में आपके जब आप बेड पे जाते हैं सोने और आपका रात के भोजन में आप गैप होना चाहिए। डू नॉट इमीडिएटली गो टू स्लीप ऑन द फुल स्टमक। खाना खाते से ही बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए। इंस्टीड ऑफ जंक फूड हैव ए हेल्दी स्नैक इन बिटवीन द डे। जंक फूड खाने से आप अगर बीच में कुछ स्नैक लेना चाह रहे हैं तो जंक फूड की बजाय कुछ हेल्दी स्नैक आप ले सकते हैं। आप फ्रूट्स ले सकते हैं। डू नॉट ऑप्ट फॉर फैट डाइट्स। कंसल्ट फिजिशियन बिफोर गोइंग ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट एंड इंश्योर नॉट लूजिंग आउट एन एडिक्वेट न्यूट्रिशन। कई लोग अपने हिसाब से डाइटिंग शुरू कर देते हैं, खाना एक टाइम करना है या खाना नहीं खाना है या शाम को सिर्फ फ्रूट खा के रह जाना है। बिना किसी भी फिजिशियन की कंसल्टेशन के आप अपने खुद के डॉक्टर मत बनिए। उनकी कंसल्ट कीजिए। आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिना फिजिशियन के डाइट पे नहीं जाना है। कीप ए चेक ऑन विटामिन डी एंड विटामिन B12 लेवल्स रेगुलरली। आपके विटामिन डी और विटामिन B12 लेवल आपको रेगुलर चेक करने हैं। तो दिस इज द diagram which is showing the importance of meals according to their usefulness. So जो सबसे लास्ट में है नीचे बेस ऑफ द दे आर सीरियल्स। हमें ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में खाने हैं। वेजिटेबल्स और फूड हमें बहुत ज्यादा मात्रा में खाने हैं। आई होप आई हाईलाइट दिस। ओके, यस आई कैन हाईलाइट। सो vegetables and fruits we can eat in plenty. Then pulses, nuts, milk, produce, and fish and chicken. Eat more monetary or bi-weekly, not regularly. Egg and fresh food, eat less. And at least eat least fat, sugar and salt. सबसे कम खाना है आपको। आपको दिख रहा होगा ये black and एक ट्रैफिक लाइट की तरह इन्होंने लाइट बनाया। Those who are symboling black, they can be eat in the plenty on quantity, but those who are in orange or red color, it can be consumed in less quantity. So celebrating word of flavors, what we have do, we can vary your breakfast. अपना breakfast जो पहला मील होता है दिन का, उसमें हमें favorite फूड इंक्लूड करना चाहिए अराउंड द वर्ल्ड। कोई भी किसी भी कोने का, जैसे कि इन दिनों हम लोग कहते हैं ना ग्लोबल सिटीजन हो गए हैं, तो साउथ इंडियन खाना खाते हैं, कभी हम नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं, कभी पंजाबी कजिन यूज करते हैं, कभी बंगाली कजिन यूज करते हैं। ऐसे ही हमें थोड़ा और अपनी पींगे बढ़ानी है और हमें वर्ल्ड दुनिया में क्या क्या खाया जा रहा है वो हमें अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करना है। हेल्पफुल ऑप्शंस आर अवेलेबल इवन इफ टाइम इज लिमिटेड। These are just a few examples for on the go or when more time is allowed for eating. A smoothie with low fat yogurt आपको आसानी से मिल जाएगा स्टोर्स पे। बटर मिल्क एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक पपाया एंड मैंगो, ये आप अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। जटर मिक्स विद लिटिल जटर आपको शॉप पे मिल जाता है। अच्छे जो शॉप ग्लोबल जो शॉप्स है वहाँ पे मिल जाता है। लिटिल ऑलिव ऑयल एंड स्प्रेड ऑन होल व्हीट पिज्जा ब्रेड एंड देन टॉप्ड विद टोमेटो स्लाइस, ऑलिव एंड कुकम्बर एंड फ्रेश मिंट, ये आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। स्कॉटिश ओटमील एंड बर्गर विद लो फैटर फैट फ्री मिल्क और फोर्टिफाइड सोया मिल्क विद ए टॉपिंग। सोया मिल्क अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं विद ए टॉपिंग ऑफ फ्रूट एंड नट्स और नट्स बटर। कॉन्गी एक चाइनीज राइस पॉरेज आता है, उसको कॉन्गी कहते हैं। दैट कैन बी सर्व्ड प्लेन और विद वेजिटेबल्स और प्रोटीन फूड such as cooked chicken or meat or fish. Vegetable upma, an Asian Indian dish that can be made with semolina or rice, spiced with ginger and other seasonings. उपमा बनाते समय सीजनिंग हम यूज कर सकते हैं, जिंजर हम उसमें डाल सकते हैं। स्पेनिश ऑमलेट विद पोटैटो and other veggies topped with a sprinkle of cheese and a omelette filled with a fried rice known as omu rice in Japan. ये लोग भी ऑमलेट को राइस के साथ फ्राइड राइस के साथ यूज करके उसको ओमू राइस बोलते हैं। ये भी ग्लोबल फूड है, इसको भी हम ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं। यूज हेल्पफुल रेसिपीज टू मेक ड्यूरिंग द वीक बेस्ड ऑन द कल्चर। थिंक सीजनली व्हेन इट कम्स टू इंग्रेडिएंट एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ डिशेज। जिसका टेम्परेचर क्या है वो भी आपको देखना होगा। इन हॉट वेदर, गर्म जब
सीजन गर्म है, गर्मियां हैं, कंसीडर पॉपुलर डिशेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दैट डू नॉट रिक्वायर हीटिंग। तो आपको वैसी चीजें खानी है दुनिया भर से जिनको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। सीजनल प्रोड्यूसेस कैन ऑल्सो इंस्पायर मील्स। द ट्राई डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स इन सीजन। सीजनल फूड खाते हैं, हिंदुस्तान में तो प्रचलन भी है कि हमें सर्दी में कुछ आता है, गर्मी में कुछ आता है, और घर में भी सब जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जो भी सीजन का जो फल है वो आपको खाना चाहिए। For additionally variety, choose ingredient with different texture and color. Different आपका जो प्लेट हो खाने का वो कलरफुल होना चाहिए। Third component of celebration is choose healthier snack that include food from different food groups, जैसे कि fruit chutney eaten with bread or cheese, raw veggies with hummus and tataki. This is available on the stores, which is a creamy yogurt based dressing made with the cucumbers, garlic and dill. Baba Gano is a mixture made of roasted eggplant बैंगन, the tahini, which is sesame seed paste, तिल के तेल का पेस्ट होता है, तिल के बीजों का पेस्ट होता है, सर्व विद होल मीट पिट्टा ब्रेड। और फॉर ए क्रंचियर स्नैक होल ग्रेन टॉर्टिला भी अवेलेबल है, चिप्स विद ग्यूकामोल और साल्सा मेड विद वेजी और फ्रूट्स। तो आपको ये सब स्नैक्स के रूप में जब आपको खाना होता है तो बहुत हैवी खाने की बजाय आप हेल्दी स्नैक्स चूज कर सकते हैं। देन 5 टिप्स फॉर सस्टेनेबल ईटिंग। ईट लोकल एंड सीजनल। लोकल फूड खाइए, सीजनल खाइए जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। ईट मोर प्लांट्स ज्यादा खाने, प्लांट्स लाइक गोभी, पालक, ये सब प्लांट्स है। रिड्यूस फूड हाई इन फैट, साल्ट एंड शुगर। ये तो आप रट लीजिए कि आपको लो फैट, लो साल्ट, लो शुगर फूड खाना है अगर बहुत लंबा लाइफ स्पान चाहिए तो। मॉडरेट मीट कंजप्शन, कम से कम मीट खाने की कोशिश कीजिए। एंड रिड्यूस फूड वेस्टेज। और हाँ, फूड का वेस्ट नहीं करना है, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव और है पार्टिसिपेंट्स, जीरो हंगर बाय 2030. This is target under the Sustainable Development Goal 2. So it will provide universal access to safe and nutritious food to all the population of Earth and all form of malnutrition. कितने भी तरह के malnutrition है उनका खात्मा करना है 2030 तक। डबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इनकम ऑफ स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, और हमें जो कृषि उत्पाद हैं उनको जस्ट डबल करना है। Ensure sustainable food production system and maintain the genetic diversity in food production. हमें वहाँ पे हाइब्रिड जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनके बारे में भी रिसर्च करना है। One more अभियान is there. This is पोषण अभियान। Stunting of children reduced by, इसके टारगेट्स हैं, ये 17 में सेट हुए थे टारगेट इन्होंने, और इन्होंने 17 में सेट किए थे। रिड्यूस स्टंटिंग इन चिल्ड्रन, जो ग्रोथ रिटार्डेशन है वो बच्चों में, रिड्यूसेस बाय 6% in 3 years। लेवल इन 15-16 में जो लेवल था 38.4 था। Stunting in children reduces 25% by 2022 this year, and underweight prevalence in children reduces by 6% in 3 years. Then low birth weight, जो बच्चे पैदा होते हैं जिनका जन्म के समय वजन कम होता है, it will be reduces by 6% in 3 years. Anemia among children reduces by 9% in 3 years, and anemia among women, adolescent girl, reduces by 9% in 3 years. This is one more important slide which shows the budget for nutrition in India. So it will show that in 2020 to 2021, it will revised in 21 to 22. It is 20,105 crore rupee, which includes Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, Anganwadi services, Poshan Abhiyan, scheme for adolescent girls and national crutch scheme. So this will provide a picture that what the initiative and what motives of government of India about the nutrition and nutritional health of the population. So 5 way to celebrate a word of flavor, हम 5 तरह से और celebrate कर सकते हैं। Try fresh grated ginger in oatmeal। ये कुछ recipes हैं जो मैंने Google से आपके लिए ली थी। Sweet and spicy अगर आप खाना हो तो try fresh grated ginger in oatmeal और quinoa for breakfast. You can, अगर आपको salty और umami कुछ खाना है, drizzle soya sauce over cooked cabbage और other greens। कोई भी green सब्जी लेके या cabbage लेके आप उस पर soya sauce डाल के खा सकते हैं। आपको रिच और वार्म खाने का मन है तो आप टर्मरिक करी, स्क्वैश, लेंटिल बेस्ड सूप पी सकते हैं। आपको वार्म और स्वीट खाना है, यूज सिनेमन और कार्डमन इन कूल ग्रेन
or baked food. And अगर आपको spicy खाना है, use garlic or Thai basil to season green beans or broccoli. So some tips are bring the bird to table. आप अपने खाने की टेबल पे दुनिया को ले आइए. Discover new flavors with herbs and spices. जो भी herbs और spices हैं उनके साथ नए flavor का आप रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी डाल के. जैसे इन दिनों हम लेमन चाय में बहुत हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. वी आर अवॉइडिंग दैट ट्रेडिशनल टी एंड वी आर यूजिंग ग्रीन टी. एंड ग्रीन टी में भी इतने सारे फ्लेवर्स हैं. यू कैन फाइंड लॉट ऑफ फ्लेवर्स इन ग्रीन टी. Take a trip to cultural and international food stores, which can be situated in your city. Try new fruit and vegetable and have a whole family involved in preparing meals together. Dinner के समय जब सब घर में होते हैं तो सारी फैमिली को इन्वॉल्व होना चाहिए खाना बनाने में, सबका टेस्ट आएगा. A live web-based series of nutrition event in India, Landmark Health and Wellbeing Forum is showcased throughout the week. ये हम सब करते हैं. And in this week, bringing relevant ministries, government and private organizations, global and national level, health and good food organizations, policy makers, corporate and social organizations working at the grassroots level, top nutrition, good food, diet expert and doctors on a live wave interaction with target audience, providing insight on the government scheme, complete healthy dietary practices and awareness on women and child nutrition. And we are celebrating by mass penetration through multiple active social media platforms and videos. Then Bharat Poshan Premier Quiz is also available. Is India's largest virtual quiz, which attracts school students and their parents pan India. This virtual quiz focuses on good food, nutrition, and healthy eating practices, and is engaging, informative, and exciting learning experience for young and growing kids with a much needed interest in quality food and healthy living. I hope you sometime you handle and you have that Bharat Poshan Premier Quiz. अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी भी इसको कर सकते हैं. Healthy खाएगा India is a drive by social media influencers, top nutritionists and chefs who cook healthy dishes online to promote healthy food practices among people. तो healthy खाएगा India एक drive है जो कि influencers ने start किया है इंडिया को healthy खाने के लिए. And how we can observe National Nutrition Week, what we can do, we can donate few food, grain and crop to people in need. जिन लोगों को आवश्यकता है उनको दान कर सकते हैं. Connect with NGO and support them. किसी भी NGO से connect होकर हम उनको support कर सकते हैं. Replace unhealthy food with nutritious vegetable and fruit and snacks. हम अपना unhealthy खाना replace कर सकते हैं healthy food से. And we can participate in program organized by Food and Nutrition Board of India. They will organize campaigns, workshops, exhibitions, awareness drive on National Nutrition Week. Likewise, Parliament University organizes and I am participating and you also participating in this program. Participate in the Ministry of Women and Child Development Paris Social Awareness Program and create awareness about the importance of nutrition through posters and information on social media. आपका अगर social media पे कोई भी account है तो आप जरूर healthy food और nutrition के लिए कुछ अपनी फोटो तो हमेशा पोस्ट करते हैं पर सोशल कॉज के लिए भी आप सोशल मीडिया पे अच्छे न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की पोस्ट कर सकते हैं. So some takeaway message: diet diversification, focusing on quality and quantity nourishes body. A healthy body make perform better. स्वस्थ रहेंगे तो सही रहेंगे. Keep a diet diary. आप एक डायरी भी रखिए डाइट के लिए. It will tell about health status. Seek qualified professional help to receive personalized nutrition care process. आपको ये रखना है कि आप क्या खा रहे हैं उसमें और क्या आपको खाना है. Encourage in nutrition label reading. आप जब कुछ खरीदने जाते हैं तो वो न्यूट्रिशन लेवल जो लिखा होता है उसको पढ़िए जरूर. From farm to plate, procure correctly, make street smart choices, incorporate favorite cultural food and tradition. Better nutrition education lead to best nutrition practices for healthy brain and brown. And मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी. शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्थ विवर्जितम भुज्यते सुरसम प्रीत्या मिताहार मिमम विदु. Pure, sweet and cooling, easy to digest, should be eaten to fill half of the stomach. Eating thus with pleasure and leaving the other half of the stomach empty is called as mitahar, moderate or balanced food. It is the source of this shlok taken from Ghera Nanda Sanhita 5.21. और एक कविता से मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करने की परमिशन चाहूंगी. चांद से चेहरों का सपना मैच एक रोटी खाने का,
किसी का स्वप्न बड़ा अद्भुत चांद पर रोटी खाने का। पेट भरती है वो अपना कसम झूठी खाकर सुत की, है जरिया एक यही घर में लाल की भूख मिटाने का। कुपोषित माता होगी घर, कुपोषित बच्चा जन्मेगा, पूर्ण कैसे हो स्वप्न भला विकसित राष्ट्र बनाने का। भरा है पेट अभी जिनका, उन्हें वह दर्द नहीं होगा, बढ़ाते शान काम करके अन्न को व्यर्थ बहाने का। भला हम किसी से कम है क्या, हमेशा अव्वल आते हैं, कुपोषण में पहला दर्जा है दूजा उपज उगाने का। कुपोषण मुक्त हो ये भारत, है वादा हुक्मरानों का, उन्हें छोड़ो प्रण तुम ले लो किसी की भूख मिटाने का। कुपोषित दे नहीं केवल कुपोषित मानवता भी है, निभाकर धर्म कर्म कर लो कुपोषित मुक्त कराने का, कुपोषण मुक्त कराने का। खैर सब अपना घर भर लो, ये भगवान की माया है, अमू का लक्ष्य कभी न था हृदय को दुखित बनाने का। Thank you very much. These are some references which I include in my presentation. और सारे स्टूडेंट्स मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक तो ग्लोबल सिटीजन बनके दुनिया भर का खाना टेस्ट करिए जो हेल्दी न्यूट्रिशन है, दूसरा खाने को वेस्ट मत करिए, और तीसरा अगर हो सके तो किसी भूखे की मदद करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पारुल यूनिवर्सिटी एंड थैंक यू प्रफुल्ल फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। That was really a wonderful session, madam. So here we have one question, madam, from the audience side. Please. The audience is asking regarding the government of India has implemented many nutrition programs. Still, we are lacking of reaching our goals, madam. Someone is asking that. Why it is that happened, madam? Because the person who is asking question is not contributing to reach the goal. हमको ये सरकार को ही सब कुछ करना है, हम क्या कर रहे हैं हमें पहले वो देखना है। आपने कभी खाली प्लेट का पूरा खाना खाया, आपने कभी किसी गरीब को खाना खिलाया? गवर्नमेंट तो प्लान बनाएगी, इम्प्लीमेंटेशन में हर सिटीजन का एक राइट होता है, सिटीजन को मदद करना है। टारगेट पूरे भी हुए हैं, मैंने प्रेजेंटेशन में डाला है, टारगेट पूरे भी हुए हैं, मालन्यूट्रिशन कम भी हुआ है, लेकिन जो टारगेट है वो तभी पूरे होंगे जब हम सब अपना कंट्रीब्यूशन दें। टारगेट हो रहे हैं पूरे, आप चिंता मत करिए, आप अपना कंट्रीब्यूट करते रहिए, टारगेट हो ही जाएंगे। Okay, so if anyone having any doubt, you can ask on live Facebook. Now you have 2 minutes. Then we are wrapping up the session. Can I see the questions, Praful ji? You can, madam. So where I can see? Facebook Live, madam. I have Okay. sent link. Okay. Okay, if there is no question, then we are wrapping up the session. Thank you, madam. It's really a wonderful session. And as a part of a nutrition week, Parul Institute of Nursing thanks all the audience. Actually, we are organizing offline mode, but due to some conditions, we are lacking of that, and we have organized an online webinar in this nutrition week. There is one quote related to the nutrition week that your body is a temple, but only if you treat it, it is one. Otherwise, it will be like garbage. Madam has already covered what madam has said. It is actually true what I feel. Most of the part madam has covered related to the nutrition, what you should eat at a morning breakfast, lunch, and a night time, in dinner time, what you have to eat. So all the part madam has covered, and really a wonderful flavor. It is a celebration for us, Parul Institute of Nursing, madam. You are here. So we thank from our side, our principal has thank you, madam. Dr. Ravindra H.N. sir has thank you for that. You have been a part of that our webinar. Thank you all the audience for your participating for this webinar. Thank you, madam. Thank you very much.